We are live. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. आई होप कि अब हम लोग लाइव हैं और आप हम लोग को देख पा रहे हैं. तो सबसे पहले आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी स्ट्रीम के लिए. और मेरे साथ आज है उद्भव. उद्भव का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं. उद्भव ने इलाहाबाद से उद्भव, इन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में यूएस जाकर. और अभी उद्भव गूगल में काम करते हैं. उद्भव पर अपनी लाइफ का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा और डिटेल में दे सकते हैं. Thank you, Rahil. First of all, thanks for inviting. यहाँ पे आके this is a very nice opportunity. So I'm feeling very grateful to talk here. और जैसे राहिल ने बोला, I'm from Allahabad. तो Allahabad is एक medium sized city in उत्तर प्रदेश. और वहाँ पे ही मैंने mostly schooling की पूरे 12 years and pretty much most of the time मैंने वहीं पे spend किया. And schooling was pretty interesting. वहाँ पे actually I was exposed to Olympiads, National Science Olympiads, National Cyber Olympiads वगैरह was very very common in our school at that time. तो उस समय sorry. No, you can carry on. Sure. So उस समय that was a very big thing, Cyber Olympiads and National Science Olympiad. So I got very excited. So that's how मेरा personal enthusiasm बना about studying in general. Like school के exams में I was not so interested, but once these Olympiads came in and the competitive thing came in that hey, I can actually compete with people and get a decent place. That's where it really drove कि अभी तो करना है सारी चीज़ें जितनी पॉसिबल हो सकते हैं. तो उसके बाद ये साइंस ओलंपियाड्स के बारे में पता चला, मैथ ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड. तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में I tried and I was part of the Indian team and I went to China in 2005 and then next year it happened in India. So I went to International Olympiad in astronomy twice और फिर math में भी I went to the team selection camp in India twice. So that was a very interesting time कि school में getting exposed to these Olympiads was very exciting. And सबसे ज़्यादा उसमें exciting था actually meeting and talking to all the other kids from all across India कि वो क्या सोच रहे हैं. बाकी kids from other metros, from Bombay, Delhi, Pune, like all the super big cities in education, like what are people thinking there? वहाँ के kids क्या करना चाहते हैं आगे. तो that was very illuminating कि समझ में आया कि ओ ये सारी चीज़ें भी possible हैं. मेरे पास सिर्फ experience स्कूल में था, थोड़ा बहुत लोगों ने क्या किया है और मेरे siblings. So that was also like very useful siblings का experience. मेरा भाई was applying for MBBS and my sister was applying for JEE. So my sister's experience was very relevant. तो उसके ही lead में मैंने follow किया in a sense कि at least I know the path on that side कि JEE जाने का क्या तरीका है. But बाकी सारी चीज़ें a lot of that I learned from the Olympiads. और फिर JEE के बाद IIT में I spent 4 years doing electrical engineering. Electrical engineering was not like my first choice. Not in a sense कि that's not something I don't like at all, but I really wanted to do science and math and something more not core, but more natural sciences. Like I really want to do some research और उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना. Mathematics really was like a calling for me at that time. तो मेरा बहुत electrical में interest नहीं था. A lot of the core courses I didn't do very well in. In hindsight, I should have like just worked through. But मैंने math courses काफ़ी किए फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में. एंड देन आई फाउंड CS कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स के कोर्स थे और
discrete mathematics के course थे, which were very much what I wanted to do. Like this is the type of thing कि मुझे बहुत interest है इसमें करने में, and I know कि I can really do well in it. तो I just took more and more of those courses कि जितने भी ज़्यादा algorithms based, advanced algorithms and any different randomized algorithms take courses जितने भी हैं, I try to take all of them. And then towards the last year of my stay in IIT, I did some AI courses as well and machine learning courses. At that time, that was very burgeoning, like very new field, in the sense that was an academic curiosity कि academia में लोग सोचते थे कि हाँ possibility है. और just a few years back, I think 2011 में they had this very big AI का competition, ImageNet, where they had a massive technological growth in their accuracies and predictions. So उसके बाद that started a growth of things कि hey, we know a path now कि किस तरफ से we can succeed in AI, or people just like pushed and into that, and now we are seeing so many different things. So my personal journey after JE kind of moved into CS, after IIT, I mean, moved into CS, computer science, because I just wanted to like learn more into the math and science things. And so I did my master's in University of California. And there I did theoretical computer science, specifically communication complexity is like super theoretical things. So that's what I was targeting in the beginning of going into research. And essentially my future for myself was just doing more research, developing new technologies like that, and maybe I saw myself as kind of like a professor, or maybe more than engineer. But at the same time, सॉरी yeah, go ahead. आपने बताया कि आपने कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी में अपना मास्टर्स किया, तो इसको सुनकर मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से बात करते हैं उसको कंप्यूटर को समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. अपने मास्टर्स के बारे में थोड़ा और बताएंगे. तो मेरा मास्टर्स का थीसिस टॉपिक कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी में था, बट कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी वैसा नहीं है. इट्स मोर लाइक जैसे आप एक मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं दो पार्टीज के बीच में, और आप चाहते हैं कि सबसे कम इंफॉर्मेशन में ये मैसेज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए. तो इस चीज़ को करने के मेथड्स और टेक्निक्स और उसके इम्प्रूवमेंट्स था मेरा थीसिस का टॉपिक. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस बहुत डेंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन डेंस होती है, जापानीज जैसे लैंग्वेज के लिए बोलते हैं, या फिर कुछ लैंग्वेजेस हाई कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेजेस होती है, कुछ लैंग्वेजेस लो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेजेस होती हैं. तो आई अज्यूम कि इस तरह की चीजें आपने शायद अपनी थीसिस में एक्सप्लोर की. तो मेरा थीसिस इस लैंग्वेज लेवल पे नहीं था. मेरा थीसिस वाज ऑन अ वेरी मैथमेटिकल सेंस कि हमने ये प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल वे में मॉडल किया था कि व्हाट डज इट, इसका मतलब क्या होता है कि एक मैसेज को दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र करना, और एक डेफिनेशन बनाई जिसमें हमें जो बताता है कि कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं. तो ये बहुत ही मैथमेटिकल है. इसको आप एक फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं कि ओके चलो इंग्लिश हमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसको कैसे कोड करें इनटू द मैथमेटिकल मॉडल, और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल को ट्रांसफ़र करें. तो वो चीज़ें कैन बी डन ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग. लाइक अभी आपको इंग्लिश में मैसेज ट्रांसफ़र करना है या फिर साइन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, वो आप एनकोड करिए इस मॉडल में जो हमने बनाया है, और फिर ट्रांसफ़र करिए बिट्स. तो दैट इज हाउ यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और आप बता रहे थे कि आपके मास्टर्स के बाद फिर आपने आपकी जर्नी कैसी रही. राइट. तो मास्टर्स के बाद मास्टर्स के लास्ट ईयर में एक्चुअली आई स्टार्टेड a lot of different things in AI and a lot of different things in software engineering. So I
kind of got more interested in that at that time, and I thought of just having a shot at hey, let's actually get some experience and see how industry is like. Because at the same time मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि इंडस्ट्री का कोई सेंस ही नहीं है कि कहाँ पे है और क्या हो रहा है, तो आई वांटेड टू गेट सम एक्सपीरियंस. तो अभी it has grown for long, but things have changed. But essentially that is how I moved into tech. और फिर I started working in a company called Bloomreach. Bloomreach एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी है. Essentially वो क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई ऐसा ब्रांड है जैसे Forever 21 या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड है Benetton और समथिंग लाइक दैट, तो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका वेब पेज होता है. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उनका वेब पेज पे आप जाके यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट. तो लोग कैसे सर्च करते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स? वो गूगल पे जाके क्वेरी लाइक एक सेंटेंस टाइप करेंगे और फिर उसको सर्च करेंगे. तो हमारी कंपनी का क्या पर्पस था उस समय कि अगर आपने हमारे साथ डील की है तो हम आपके सर्च रिजल्ट्स को सबसे ऊपर कैसे ला सकते हैं. तो अगर आपका एक रेड शूज़ का सपोज कोई प्रोडक्ट है, तो अगर गूगल सर्च किसी ने किया है रेड शूज़ और उसकी रैंक अभी लाइक 20th है मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स में, तो दैट कंपनी कैन पे अस कि भाई वी वांट टू डू समथिंग, कुछ करिए जिससे रिजल्ट्स इम्प्रूव हों. तो आर टेक्नोलॉजी अलाउड देम टू इंक्रीज देयर विजिबिलिटी इन गूगल रैंकिंग. तो उनकी रैंक इंक्रीज हो जाएगी, सपोज 15 या 10 हो गई, तो लोग जल्दी उसे फाइंड कर सकते हैं. उन्हें फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा या फिर इमीडिएटली आफ्टर सर्च गोइंग टू द नेक्स्ट पेज दे विल फाइंड इट. तो वैसी चीज़ें it translates directly to revenue. More people can find the thing, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा. तो that's how the product was. So I worked there for 2 years, and then I applied to Google, and I got in, and then that's where I've been since. And it's been a pretty interesting journey. There have been बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं गूगल के अंदर. जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऑब्वियसली वहाँ पे अभी नहीं हूँ. तो गूगल के अंदर बहुत सारी मोबिलिटी है. इट्स लाइक इतना बड़ा स्पेस है, तो उसमें इट वाज वेरी इजी टू जस्ट स्टार्ट डूइंग एनी अदर थिंग दैट यू वांट. तो अभी नाउ आई एम वर्किंग ऑन an Android technology and something that deals with speaking and helps children learn to read. So that is very exciting, and that's what we'll be launching pretty soon. So yeah, अभी वो चल रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग उद्भव. जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हैं उद्भव, जो कि गूगल में डेवलपर हैं. एंड एक और चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो ये है कि उद्भव और मैं कॉलेज में 4 साल सेम विंग में रहे. तो जब उद्भव हमें बता रहे हैं ओलंपियाड्स के बारे में, तो मुझे याद है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो उद्भव, मैं और हमारे कुछ दोस्त फर्स्ट ईयर के फ्री टाइम में फाइनेंस लेक्चर्स की किताबें साथ में देखा करते थे. जब उद्भव आपको बता रहे हैं कि उनको, जब उद्भव आपको बता रहा है, क्योंकि ये मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है, तो ही इज एब्सोल्युटली राइट. अपने फ्री टाइम में उद्भव फाइनेंस लेक्चर्स पढ़ना पसंद करता था. उद्भव म्यूजिक बजाना भी बहुत पसंद करता था. हम लोग को तो बड़ा पसंद था, उद्भव के नेबर को शायद इतना पसंद ना हो. उसको लेकर भी हमारी कुछ स्टोरीज है. लेकिन आई होप कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. आपको उद्भव आगे जाके ये बताने वाले हैं, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि सिलिकॉन वैली में एआई में क्या चल रहा है. हम लोग ये सब तो सुनते रहते हैं कि एआई में ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जब आप किसी चीज के सेंटर में होते हैं, एंड सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का सेंटर है आज के जमाने में, जैसे इंडिया में बैंगलोर सेंटर है, वैसे सिलिकॉन वैली दुनिया का एक सेंटर है एक तरह से टेक्नोलॉजी का. तो वहां पर लोग एआई के बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं और लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे इस वेबिनार में. इस बारे में हम लोग जानेंगे उद्भव से आगे. तो उद्भव ने हमें बताया अपना थोड़ा बैकग्राउंड. उद्भव, आप ये बताएंगे कि आप तुम्हारा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था और तुम्हें लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील. तो क्या ये बहुत बड़ी बात है कि एक फील्ड से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट करना कितनी बड़ी बात है? आई थिंक मेरा पर्सनल केस थोड़ा डिफरेंट था इस सेंस में कि मुझे ऐसा कंप्यूटर साइंस से कोई स्पेसिफिकली लगाव नहीं था कि कंप्यूटर साइंस ही करना है या फिर इलेक्ट्रिकल ही करना है या कुछ.
मुझे आई वाज बहुत ही नाइव सेंस में एक आइडिया था कि मुझे मैथ करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आई वांट टू स्टडी मैथ। तो मेरा वो इंसेंटिव ये था कि ये सारे कोर्सेज से आई विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट मैथ, एंड दैट इवेंचुअली विल हेल्प मी समहाउ। पर at the end, towards the close of the 4 years of undergrad, तब मुझे लगा कि नेक्स्ट स्टेप्स के लिए कंप्यूटर साइंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जहाँ पे मुझे एंड अप करना था, या तो रिसर्च इन मैथमेटिक्स या तो टेक साइड ऑफ थिंग्स, दैट सी एस वॉज द मोस्ट ऑब्वियस चांस। तो मेरे पर्सनल केस में क्या हुआ कि आई हैड सो मैनी कोर्सेज दैट आई हैड डन, कि एल्गोरिदम्स के सारे कोर्सेज और मशीन लर्निंग के कई कोर्सेज और कंप्यूटर विजन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ मेरे लिए जस्टिफाई करना कि आप क्यों मूव करना चाहते हैं। व्हेन यू राइट अ कॉलेज एप्लीकेशन, वहाँ पे एसेंशली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस कि मुझे क्यों ले, लाइक why do I have the potential, and this is what I have. And so there it was easy to say ki ha, I have shown interest already and I have done decently in performing in these courses. तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे पर्सनली लगा आसान था मेरे लिए, but I have seen experiences of people who have come from wildly different backgrounds, who are not related to CS at all, and who still come in and they still are able to show excitement and potential and enthusiasm. तो आई वुड से पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट था, बट in a sense it just requires to have to show that thing कि भाई क्या किया है आपने CS के बारे में, आप एक्साइटेड क्यों हैं CS के बारे में। एंड इट डजंट नीड टू बी कि मैंने 4 साल तक कोर्सेज किए और 1 साल तक कुछ किया। any small thing you can do and say कि I have done this and this shows interest कि अब मुझे CS में जाना है, and that also shows कि you are serious and you have also got the experience, and if you can use that however small, however large it can be, to already build some things that might just be demos or POCs, but that just shows that you can do something end to end. And you're not just there to I've done this and tick marked, but to actually say that you can read these things which are outside of your domain, immediately pick them up and do something good out of it. तो essentially इतना मैटर नहीं करता है कि क्या फील्ड थी आपकी अंडरग्रेड में, व्हाट मैटर्स कि अब आपके पास क्या पोटेंशियल है और अभी आप क्या कर रहे हो। अगर अभी ऑलरेडी आप कुछ भी टेक रिलेटेड कर रहे हो, भले ही आपका कंप्लीटली आर्ट्स में अंडरग्रेड हो, it doesn't matter. What matters is the current experience. And for instance, if you get like a interview kahin pe bhi, so that essentially means ki that is beyond like all that degree thing is sorted out already. Nobody cares for that thing anymore, and all that matters is your performance in the interview and so on. So degrees doesn't really matter, but if you are going into like a college or higher studies, then you just need to justify that why they should choose you over all the people who have already done computer science. So all that takes is thoda bahut proof of commitment, कि भाई skin in the game. लोग 4 साल कोर्स करते हैं, भले ही मैंने वो ना किया हो, पर मैंने कुछ और किया है which is given equal or the same level of experience and skills. ये तो काफी इनकरेजिंग है उद्भव, क्योंकि अगर किसी ने किसी और फील्ड में भी डिग्री की है, बीटेक भी नहीं किया और उन्होंने कोई और डिग्री भी की है, लेकिन अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वो बना देते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि वो बाकी लोगों को दिखा सके कि हाँ सच में मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उनका कहीं पे भी सिलेक्शन होना ज्यादा लाइकली है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो जो कि काफी मोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, या फिर भैया मेरी डिग्री तो कॉमर्स में है, तो मैं क्या करूं, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूं। तो आप जो कह रहे हैं वो काफी मोटिवेटिंग है, काफी इंकरेजिंग है उन बच्चों के लिए। ठीक है, दैट्स वेरी गुड टू हियर। और उद्भव, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत फैसिनेटिंग एनिग्मा है, एक कल्चरल फिनोमेना है। गूगल बहुत फेमस है कि फैंसी लंचेस, आपके यहाँ बुफे में सब तरह का खाना अवेलेबल होता है, कंपनी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, आपको बहुत सारे डिफरेंट फ्रीबीज मिलते हैं, और एसेंशली कंपनी आपको स्पॉइल करके रखती है इन द सेंस कि आपको बहुत फ्रीडम मिलता है, आपको 20% टाइम खुद का काम करने के लिए मिलता है, सैलरीज तो खैर बहुत अच्छी होती हैं। तो एक तरह से गूगल एक बहुत अमेजिंग कंपनी है बहुत ही सारे लोगों के लिए। मैं भी बोलूंगा कि गूगल इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो आपका जर्नी गूगल तक कैसे पहुंचा? क्या आपका टारगेट था गूगल पहुंचने का, या फिर आपको लगा कि बेस्ट काम गूगल में हो रहा है तो वहां जाना है, नेचुरली आप वहां पहुंच गए? राइट, राइट। तो जैसे आपने बोला कि गूगल इज लाइक एन ऑब्वियस टारगेट फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे क्या है कि इट्स no one needs to justify कि गूगल क्यों जाना है। if you are in tech and तुम्हें पता है कि टेक्नोलॉजी में क्या करना है, एंड अगर वो बहुत ही ऑब्सक्योर और ऐसी चीज़ है जो गूगल में नहीं हो रही है और समथिंग, और वहाँ पे मे बी गूगल इज नॉट द लीडर, बट unless that is the case, it's pretty obvious that you apply to Google. तो उस सेंस में I knew that it is a great place for tech people in general. That the culture वहाँ पे is very much very honest in that sense कि ऐसा नहीं है कि हम appearances बना रहे हैं और people are just showing some things which are not true or whatever. Everything is like very, very based on real numbers, and honesty is like super preferred there. So that thing felt, as an engineer, felt like really refreshing, that I mean, it's a really good place even within Silicon Valley for tech people. So that is a pretty amazing thing to do. So that also was another thing कि Google को target specifically करना था. But ऐसा personally मैंने सोचा नहीं शुरू में कि I will target Google specifically. I applied to all these places at the beginning, and Google notoriously has like a very difficult interview. But preparation was important, I would say. Is preparation in terms of your understanding key sare fundamentals of algorithms, and I mean, if we get down to the basics in the interview, what matters is algorithms, coding, how clear you are in your thinking, how clearly you convey your ideas, and how fast you are in not fast in the sense that, hey, you finish this off in like 10-20 minutes or something, but not that you are like lazily struggling outside of the time and something like that. So these kind of things essentially you can pick up at any time. Like I didn't think कि मैंने Google के लिए बहुत specifically कुछ prepare किया, but I just gave my best to prepare within a couple of months. And after that, I was just applying to a bunch of different companies at that time. And Google was one of them. And luckily, I got the offer, and that was that. And I'd say it's just like preparation, being really solid about being confident about your skills. I think it's more important than actually knowing that. Because if you're not confident, I think even if you know things, that can hinder the performance at the end, and that's what matters, the day of performance, and confidence really helps in that. वेरी इंटरेस्टिंग उद्भव। और अब जो हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है कि एआई में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, या फिर एआई में आगे जाके क्या होने वाला है, कैसे कोई एआई में घुस सकता है, उस बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि एआई एक बज़वर्ड है जो कि हर जगह सुनने को मिलता है, और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के आगे एआई लगाने लगी है आजकल, क्योंकि बहुत हाइप हो गया है एआई को लेकर। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बार आम भाषा में, लेमन्स टर्म्स में डिफाइन करें कि एआई होता क्या है। तो एआई का एसेंशियल आइडिया, एक कोर आइडिया क्या है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। अब
सबसे बेसिक एग्जांपल जो एआई में शुरू करके बताते हैं कि एक पिक्चर आपके पास है और आपको बताना है कि उसमें कैट है या डॉग है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम लिख दें क्लियर रूल्स के साथ कि हे अगर ये होता है तो ये करिए, ये होता है ये तो ये करिए। और दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह की बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमारे पास ह्यूमंस लोग काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हाट इट इज़, समझ में आता है उन्हें। जो ये ह्यूमन स्किल्स हैं वो मशीन्स के थ्रू करना, दैट इज एसेंशली machine learning, artificial intelligence, all that. So what is the machine learning? Machine is learning these human skills, uh, to talk, to understand language, to see, to understand vision, and to develop art, to develop music. तो ये सारी ह्यूमन स्किल्स हैं जो अब मशीन्स के थ्रू हमें करना है। तो दैट इज द कोर क्रक्स कि अब हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द ह्यूमन आउटपुट थ्रू मशीन्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी हम लोग जब एक एज अ रेगुलर गाय जो कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्टेड है, हम लोग जब अपने आसपास एआई देखते हैं तो एक चीज जो काफी कॉमनली हम लोग देखते हैं वो है वॉइस असिस्टेंट्स, जो हम लोगों से बात करते हैं हमारे फोन्स में या फिर एलेक्सा के थ्रू या गूगल असिस्टेंट के थ्रू। और जितना मैं जानता हूं कि उसी चीज पे आप भी काम कर रहे हैं। और कहाँ एआई का टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी वाइड स्प्रेड है, ऑलरेडी वेल अडॉप्टेड है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स, और ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जो हम लोग नॉर्मली नोटिस नहीं करते बट जहाँ पे ऑलरेडी एआई काफी मेन स्ट्रीम हो चुका है? तो जैसे आपने बोला कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग वॉइस एंड लैंग्वेज बहुत एडवांस कर चुका है। उसी सिमिलर वेन में नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, वॉइस जनरेशन का बहुत ही एडवांसमेंट हुआ है। अभी आपने जैसे गूगल असिस्टेंट की बात की, गूगल असिस्टेंट तो आई वुड स्टिल से कि इट्स नॉट द बहुत ही एडवांस्ड एआई नहीं है वो। तो देर आर अदर लाइक द मोस्ट एडवांस्ड एआई इज नॉट आउट देयर येट। मोस्ट एडवांस्ड एआईज आर अभी इन हाउस, अभी वी आर स्टिल टेस्टिंग कि उनको लॉन्च कैसे करें। तो there are very very exciting things that are coming up. These languages, especially in translations, बहुत ही advancement हुआ है। अभी English to essentially any language is very very I would say very high quality. Similarly for any language to English is very high quality. The problem is like languages A to B which are not English. तो उसमें हमारे पास डेटा की कमी है कि अगर एक लैंग्वेज बहुत ही ऑब्सक्योर है और उस वहाँ पे उसके स्पीकर्स कम हैं, नेचुरल स्पीकर्स, और उनके ऑब्वियसली फिर डेवलपर्स कम होंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट इट जस्ट क्रिएट्स एन प्रॉब्लम कि उस फीचर को डेवलप करने के लिए लोग ही नहीं हैं। तो दैट बिकम्स अ ह्यूमन सोशल प्रॉब्लम एज वेल ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो वो सारी चीज़ें we are developing super in like leaps and bounds. वॉइस जनरेशन जैसे मैंने बोला, अगर आप 5 साल पहले की गूगल मैप्स का वॉइस जनरेशन सुने और अभी का गूगल मैप्स का वॉइस जनरेशन सुने तो इट्स लाइक जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो these kind of things are becoming supernatural, like not supernatural but super very very natural in a sense कि बहुत ही human like। और in a similar vein, voice assistants are now able to give external businesses call। तो आप अगर सपोज आपको एक हेयर कट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है या फिर कोई कहीं पे बुकिंग करनी है किसी वेन्यू की या व्हाटएवर, तो इंस्टेड ऑफ आप खुद कॉल करें, नाउ देयर आर वॉइस असिस्टेंट्स दैट कैन कॉल द बिजनेस और उनके साथ सारा शेड्यूल कर सकते हैं completely based on जो उनका रिप्लाई आता है, according to their changes they tune their own responses and they can complete the booking by themselves or do the business that you have. Still at a very simple things like maybe order some things or very simple booking, but
दिस इज समथिंग दैट जो 5 साल पहले नहीं था, और 5 साल पहले इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे ही लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल कम्स कि ओ ये भी पॉसिबल है, ये हमने नहीं सोचा था, दैट ओपन्स फ्लड गेट्स कि अभी everyone will start doing this now. Like everyone will give it a shot and see what happens if it's within their reach. So some of the things are really advanced in a sense. अभी recently now एक बहुत ही large models are becoming popular in natural language. Large models का मतलब कि these are models जिसमें billions and billions of parameters होते हैं। तो parameters का क्या मतलब एक मॉडल के अंदर कि एक चीज जिसको आप ट्यून कर सकते हैं जिससे रिजल्ट इफेक्ट होगा। तो these are like 300 or 400 billion parameters inside it, and these things are performing extremely well. Now I had the opportunity to interact with one of these models in Google, and the kind of things you can do with it is insane. Like तो इनको क्या बोलते हैं, these are like one shot learners. One shot learner का मतलब है एक एग्जाम्पल देकर, just one single example, they learn what you want them to say. उनसे क्या आप पूछना चाहते हैं, they learn एक एग्जाम्पल में. I'll give you an example. तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे सॉन्ग्स रिकमेंड करो 80s के, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल सॉन्ग, और दैट्स इट. उसके बाद ask for songs from the 70s, songs from the 60s, songs from the 50s, and it gives you the right answers, the right factual answers. So these models are like very very advanced, but at the same time that creates issues कि we don't really understand, इतना understanding नहीं है इनके बारे में कि ये काम कैसे करते हैं. क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट और नई टूल्स एंड टेक्निक्स बनाने में इतने बिजी थे. And I mean, it's not like a bad thing, but this is how technology progresses first. We like develop it so much in a specific thing, और उसके बाद अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा क्यों काम कर रहा है. तो उसके लिए अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि अब हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये रिजल्ट कैसे आया. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनलेस हमें पता हो कि ये कैसे काम करता है, वी विल नॉट नो कि ये कहाँ फेल होगा, किस तरह से फेल होगा, और उस फेलियर में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस कंपनी के पास या फिर जो यूज़र है उसके पास. तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये मॉडल इतने पावरफुल हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि अभी हम यही पता कर रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, इससे कर क्या सकते हैं, और अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कर कैसे रहा है और कहाँ पे फेल होगा और कैसे फेल होगा. तो ये सारी चीज़ें आर द करेंट फ्रंटियर कि ये हमें पता करना है, और फिर हाउ कैन वी यूज़ इट इन लाइक एन एक्चुअल प्रोडक्ट, लोगों के पास कैसे भेज सकते हैं, किसी रियल चीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको. दैट्स द नेक्स्ट थिंग. वेरी इंटरेस्टिंग उद्भव. और क्योंकि आज हमारे साथ काफी यंग लोग भी इस वेबिनार में प्रेजेंट हैं, तो जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई एक यंग प्रोफेशनल है या कोई एक यंग इंसान है जिसने अभी कॉलेज खत्म कर लिया है या जो अभी कॉलेज में है या मे बी अभी स्कूल में ही है, स्कूल खत्म कर लिया है, और वो चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल करियर बनाए, तो एआई आजकल एक बज़वर्ड है, एक हाइप एआई को लेकर काफी है, और सब लोग जानते हैं कि एआई से बहुत सारी चीजें बहुत इफेक्टिवली बहुत इजीली हो पा रही हैं. तो कोई चाहता है कि मैं एआई में अपना करियर बनाऊं, तो आप उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं? तो एआई का एक्चुअली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एआई इज ऐसी चीज़ है जो कोई भी अपने अकेले एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ, एक लैपटॉप के साथ, दे कैन लर्न, दे कैन एक्सपेरिमेंट, और उसके साथ गो हाउएवर डीप यू वांट टू गो उतना जा सकते हो. ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं आपको फेस करने में मिलेंगे कि अरे यार ये चीज़ मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सो एंड सो लिमिटेशंस हैं. तो एआई एसेंशली एजुकेशनल में इतना डेमोक्रेटाइज हो चुका है कि अभी बैरियर्स बहुत ही कम हैं एंट्री के. तो
उस सेंस में AI is one of the real easy fields to be able to get experience yourself, compared to, let's say, things like networking या फिर uh, um, uh, um, something like large computer modeling or something like that. So these kind of things require you to have specialized hardware or uh, big data centers where you can experiment with them. But for AI, you can go to TensorFlow, go to PyTorch and all these kind of things, go read their tutorials and install their notebooks and just tweak a few things. You don't even need to code right now, and you just edit a couple of lines, give it the data that you want to work with, and that's it. It will just give you an end-to-end model that you can now use. So that's amazing for getting you excited that, hey, I didn't know anything about coding, I didn't know anything about anything. I just went to this website, like followed like a simple basic instructions, and oh, this is something interesting. Maybe I can now think of things कि मेरा यूज केस क्या है इस पे, कि once you know कि यार टूल्स क्या क्या हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना, दैट्स योर जॉब, राइट? लाइक दैट, एंड दैट्स द की कि बट लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट टूल्स आर अवेलेबल नाउ, और उसके लिए यू हैव टू गो एक्सप्लोर कि अभी क्या हो रहा है. एंड AI फील्ड इज ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग सो फास्ट कि अगर आपने 2 महीने पहले कुछ चेक किया कि हे दिस वाज नॉट पॉसिबल, और 2 महीने बाद चेक कर रहे हैं, तो दैट माइट ऑलरेडी बी देयर. लाइक किसी ने गिटहब पे कुछ कोड डाल दिया है जो आप तुरंत डाउनलोड करके रन कर सकते हो, nothing to do from your side, and it'll generate some output. It'll be something that you can play around with and learn from it. And then if you are excited to do something on top of it, और या फिर तुम्हारे पास कोई specific problem है जो तुम्हें लगता है कि ओ this tool now can help in solving that, कि अरे मुझे suppose green plants और red plants में differentiate करना है, like arbitrary problem, but like someone might very easily have this. तो कल को जाके you can just download a very simple thing, give it the data that you have of red and green plants, and within like a couple of hours you will have a working system. तो आज की एज में आई थिंक AI को एंटर करना है super easy if you are excited about it or excited about learning, and that's the key thing. कि there's a lot of learning. शुरुआत में you will feel very overwhelmed कि there's a lot of math to learn because the core of the AI and everything is a mathematics model, right? At the end of the day, तो वो फंडामेंटल चीज अंडरस्टैंड करना थोड़ा जरूरी है आज से, और उसके बाद things become very easy. And but that doesn't need to like come at the beginning. That can happen once you want to really dedicate time कि हाँ अभी मुझे टूल्स और टेक्निक समझ में आ गई हैं कैसे यूज करना है, पर अब मुझे लर्न करना है कि ये काम कैसे करते हैं, हाउ डिड पीपल डेवलप दिस. तब at that time you can go and read about it, understand the mathematics behind it and all these kind of things. But you can go super far ahead without even learning the intricate mathematics of it, but you can just learn about what are the techniques that you use to kind of work with this data just by following some tutorials, guides on the internet and so on. So it's like just super simple to like get started. It's just about your own how much enthusiasm you have. वंस अगेन अनुभव, ये बहुत अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि AI में एंटर करना चाहते हैं. थोड़ा सा गाइडेंस मैं चाहता हूँ कि आप हमें और दें कि अगर कोई एक्साइटेड है कि मुझे AI का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने कहा कि कुछ वेबसाइट पे जाके आप कुछ मॉडल्स को यूज कर सकते हैं या फिर अपने खुद के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं. क्या ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जहां पर बैरियर टू एंट्री लो है, यानी कि जहां पे कोई भी जा सकता है जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो और कुछ क्रिएट कर सकता है? इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के साथ? या मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा एक्चुअली कि मुझे एक
मैंने एक्चुअली कई साल पहले एक सर्वे किया था ऑफ लाइक ट्राइंग टू फाइंड कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है एआई में, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज एंड ऑल दैट। तो लगभग 3 साल 4 साल पहले ऐसा किया था मैंने। और तब के बाद से अभी कुछ महीनों पहले ही मुझे एक प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ का आइडिया आया था जो मुझे लगा कि बहुत इजीली शायद एआई से सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे क्या करना था कि एक सॉर्ट ऑफ इमेजेस स्प्लिट करनी थी कि एक टाइप की इमेजेस और दूसरे टाइप की इमेजेस। तो ये चीज़ करना लाइक मुझे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट कि मैंने किया हुआ है कभी ये, पर आई हैड रेड ये 3 4 साल पहले कि एक ऐसी चीज़ इज ऑन द पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हैं कि एक इमेज मॉडल जो होता है, कि एक मॉडल जो कुछ चीज़ें सेपरेट करता है, बताता है कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, उसका एक छोटा पार्ट आप एक पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से ही ट्रेंड है, वो इनिशियल दूसरी चीज़ें सेपरेट करने के लिए, और एक उसके ऊपर एक पार्ट ऐड कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा अब आपकी चीज़ें सेपरेट करने के लिए, जो जिस तरह की इमेजेस आपको सेपरेट करना है। तो उस छोटे से चीज़ को ऐड करके आप ये पूरा मॉडल ना फिर से ट्रेन कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे मॉडल, छोटे डेटा सेट पे। तो सपोज शुरू वाला मॉडल, ओरिजिनल मॉडल अगर एक 10 लाख या 1 करोड़ इमेजेस में लेकर ट्रेन हुआ होगा, तो अगर आप वो प्री ट्रेन पहले से ट्रेन वाला मॉडल का इनिशियल पार्ट लेकर आप जस्ट अपना पार्ट ऐड करें, तो बहुत ही कम डेटा 3 4 हज़ार इमेजेस में काम हो जाता है। तो यही मैं करना चाहता था। तो मुझे इस पूरी प्रोसेस का आइडिया था कि हाँ ये कैसे कैसे है, और आई वॉज रेडी टू गो अहेड एंड लाइक ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऐसा चीज़ कि कोड करते हैं ये कैसे होगा। पर सरप्राइजिंगली जब मैं गया, टेंसर फ्लो गूगल के द्वारा एक टेक्नोलॉजी है फॉर डेवलपिंग एआई मॉडल्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज और प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि गूगल ने खुद ट्रेन किए हैं, खुद डेवलप किए हैं। और एआई मशीन लर्निंग में ऐसे कई पैटर्न्स अब डेवलप हो गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एज इफ कोई दूसरी लाइब्रेरी थी कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी सपोज टेक्स्ट प्रोसेसिंग की जैसे कोई लाइब्रेरी होती, बहुत ही स्टैंडर्ड सी चीज़, कैपिटलाइज करना है सपोज लेटर्स, उस तरह से आप नाउ अब ये एआई वाले कंपोनेंट्स एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ कर सकते हैं कि और किसी ने पहले ही डेवलप करके रखा है और आप बस यूज़ करके बस अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की कि एक इनिशियल मॉडल का पार्ट लेकर अपना पार्ट ऐड करो और फिर उसको फिर से ट्रेन करो एक नई सेट ऑफ इमेजेस पे जो छोटा है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी डन था। तो मुझे क्या करना पड़ा, बस वेबसाइट में जाके आई हैड टू फाइंड कि कौन सा ट्यूटोरियल है ये जो सर्च करना है। ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं इसे, इमेज क्लासिफिकेशन बाय ट्रांसफर लर्निंग। तो इमेज क्लासिफिकेशन इज द प्रॉब्लम जो मुझे करनी थी, क्लासिफाई इमेजेस एक क्लास से दूसरी क्लास में। और ट्रांसफर लर्निंग का मतलब वो कि एक मॉडल लर्न किया और उस लर्निंग को हम एक नए मॉडल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया और एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन मेथड है, बट ये सारी चीज़ ऑलरेडी कर दी चुकी है लोगों ने। तो आपको क्या करना है इज जस्ट लाइक एक सपोज 1000 इमेजेस आप लेकर बस उस मॉडल को देते हैं एंड अपने कंप्यूटर में सेव करिए, रन करिए, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ सिस्टम दैट कैन नाउ आइडेंटिफाई दोज थिंग्स फॉर यू, कि अब आपको रेड प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स का आइडेंटिफायर मिल गया एक सिस्टम, नाउ यू कैन रन दिस ऑन एनी इमेज यू वांट। तो ये काम मैंने एक शाम के अंदर कर लिया और मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। आई मीन अगर आप एक दो लाइन में अपनी मतलब स्पेसिफाई इनपुट लाइन स्पेसिफाई करना वगैरह होता है तो वही सब करना पड़ा, और बस इमेजेस कलेक्ट करना सबसे बड़ा टाइम था मेरे लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास एक्सपीरियंस था कि आई न्यू व्हाट आई वांट टू फाइंड, तो आई कुड गो एंड फाइंड दैट इमीडिएटली एंड स्टार्ट डूइंग इट विद इन एंड गेट रिजल्ट्स एक दिन के अंदर। पर
this is also easy for someone who's learning right now. तो instead of like just going to that thing जो मुझे specifically चाहिए था और जो मुझे करना था, आपको जाके थोड़ा शुरू के tutorials भी learn करने पड़ेंगे, like if you are unfamiliar with this, but just a couple of things to get you started. पर उसके बाद everything is like already there, कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट एक चीज चाहिए जो आप यूज कर सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ पे इट वर्क्स, इट डजंट वर्क, and then go build something that you actually want to build. And that's super simple now. And if you want to use the same thing, then just provide the data and you're good to go. And if you want to improve that thing, then maybe you'll have to like get a little more experience, learn it, tweak it, and those kind of things. But even that is extremely easy. You just read a previous tutorial first and get to building that thing now. वेरी इंटरेस्टिंग उद्भव. ये भी काफी इंकरेजिंग है कि बैरियर टू एंट्री काफी कम हो गया है किसी के लिए भी एआई सीखने के लिए. विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि अभी क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में हैं, व्हाट डू यू हियर अबाउट यू? आप अपने आसपास क्या सुनते हैं कि लोग एआई में किस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं? कौन से नए प्रॉब्लम्स लोग एआई से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से नए बिजनेसेस लोग एआई से बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से नए क्रेजी आइडियाज लोग जर्मिनेट कर रहे हैं? Right. So actually, like one of the biggest issues right now AI का क्या है कि biases in models. तो biases का क्या मतलब है कि एक मॉडल, like AI मॉडल का क्या मतलब है कि it's just a compactified form of all the data, and like जितना भी डेटा उसको दिया गया है, जिससे उसको ट्रेन किया गया है, उसका एसेंस वो कॉम्पैक्टिफाई करके अपने अंदर स्टोर कर रहा है कि भाई अब नया डेटा है तो कैसे मैं मैच करके या फिर उससे कैसे पैटर्न्स निकाल के नए रिजल्ट प्रोवाइड करूं. तो अभी सारी चीजें एसेंशली मॉडल का सोल इज द डेटा दैट इट गोज इनटू ट्रेनिंग इट. तो बायसेस में क्या है कि अगर उस इनिशियल डेटा में कुछ बायस हो कि suppose that is only talking about, say, the Western people, right? Like, so it will only understand the Western culture, the Western side of things. And if it's a language model, for instance, it will not understand the way Indians sometimes speak, and the way our English sometimes is different from like some of the things that they say. So these kind of things are becoming very apparent now that we are launching these models in a large and wide scale. And this is an extremely challenging problem to solve as well, because first of all, you don't even know what sort of biases will come up, because the data, like by definition, is required to be so large that you can't identify, like you can't analyze the data beforehand. Like what becomes apparent in the final model is what you see, and then you want to tackle those kind of things specifically. So this whole iterative cycle becomes very difficult in a sense that we are not even sure what we are looking for, and the problems just like come out as you see them, and you cannot preemptively solve for them. So that's something that research has been going on, and like a lot of people are putting effort into solving those kind of problems, specifically like at a place like Google, where anything that we launch affects everyone and very fast. So we can't like take liberties in that sense that hey, something that we have trained here will automatically work for everyone. So we need to really make sure that these models are equitable. They are equally good for everyone, and not just help like a particular fraction or faction of society, and even worse, like maybe give worse results for another faction, which can lead to like legal and social troubles and all that. So biases is one thing that's huge. Another thing is large models. Like I said, large models have recently become a thing in the last 3, 4, 5 years, where we have seen that if you just
have a large model, like a large enough model, and just provide it with a huge number of data and just train it for a very long time. So just push it to the extremes. Then we see some very, very dramatic results. Like the one I mentioned, where at Google there's are like one-shot learners. They can learn incredible things immediately, and now we are trying to figure out how can we actually make use of these things. So that's another problem where we are trying to figure out that the models are so big that even productionizing them is now a tech problem as well. That it's not like a small size thing that you just can put anywhere and just start running on it. Just give it some data and it pops out a result. These things are huge, and to get a result out of them even might take like many seconds, which might work for one person, but to scale it to billions of people, that won't fly if a single request takes 1 second. So that's something that we are actively working on, to how to optimize these large models as well, to make them work at scale. वेरी इंटरेस्टिंग. उद्भव, अगर हम लोग बात करें लेट्स से बिजनेस आइडियाज के बारे में या फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जो लोग एआई से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कंसिस्टेंटली सुनते आ रहे हैं कि एआई का यूज करके मेडिकल डायग्नोसिस थोड़ा बेटर हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा असम्पशन ये है कि कुछ इमेज रिकग्निशन करके वो समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर है या नहीं है, या फिर एआई का यूज करके हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी इंसान का जेनेटिक मटेरियल लेकर कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि वो किसी एक बीमारी के लिए प्रीडिस्पोज्ड है. एंड दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वी हियर. बट आई अज्यूम कि सिलिकॉन वैली में देयर आर अदर क्रेजी थिंग्स एज वेल. फॉर एग्जांपल कि आपके बारे में जानकर आपका स्विगी या आपका जोमेटो ऑर्डरिंग हिस्ट्री लेकर बता दे कि अच्छा ठीक है टुडे मे बी यू वांट टू ईट दिस. इस तरह का कुछ क्रेजी वैकी आइडियाज. आई थिंक ये सारे आइडियाज थोड़ा काफ़ी टाइम से एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो अगर आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि बेस्ट बाय नहीं, टारगेट करके एक स्टोर है यहाँ पे. इट्स अ चेन ऑफ बिग जनरल स्टोर्स एंड ऑल दैट. तो दे डू अ लॉट ऑफ AI and data crunching on their customers, on उनके sales patterns and all that. तो उन्होंने they had figured out that a girl who was shopping for some pregnancy related items might be pregnant, and she might be like this month into her pregnancy. So they started sending out these cards and promotional offers which said, hey, this might be useful for pregnancies and all that, for the upcoming child and such. But the girl didn't tell their family that she was pregnant, and the father found out that this is that. And this was essentially a example of how AI has come up to such an extent where they already know about you more than even you might think of. So just by looking at the patterns that you are doing of events and things that you are doing, AI is already at a stage where these things are very much in a reality. They might happen behind the scenes. Specifically, if I talk about things that you might not see, is one of the main things is ads. So all of ads is powered by AI. Like that's one of the fundamental things that all this data and all information about you is tracked, is to figure out what ads to show to people at the end of the day, right? And if you really want to like see progress in AI, you have to look at how tuned ads are to you now. And you can see that in recent years, these things have become extremely quick at learning and identifying your patterns of what kind of things that you might want to be trying to find or looking for, or already looking for and haven't been able to find. So that's maybe not as exciting, but fact of the matter is that's what the industry is going, like, is powering at the end of the day, right? All that data from AI and all that is going in ads, first of all, in
these big places. There are other new things that are coming up, and like you mentioned, computer vision has advanced exceedingly in the last 5 years specifically, and we have developed better than human recognition systems for a lot of problems. So like you mentioned, tumor recognition is almost, or if not already, at the brink of breaking human recognition barriers. So this has already been done for general recognition tasks. These systems are already better than humans, but now we are looking at these specialized tasks that we need actual human professionals to do them. And can AI actually do these specific challenges where people study and go through immense number of hours and years even to become a professional and a leading figure in that? Can AI do that automatically? So that's essentially, I'd say that's slowly leading up the growth into different kind of areas. For instance, now you realize that before we realized that we could solve general objects and these kind of results, and now we are finding that even advanced targets like these medical imagery is possible via AI. And now the cream of the challenge for computer vision is self-driving. And self-driving has been the major driving force for a lot of these companies like Google, obviously. Tesla has been doing impressive amount of work on this, and Uber for a long time was working on self-driving as well. They had a couple of setbacks because of some accidents, which were quite public, but I think they have sold off their things, so some other companies are doing that. But self-driving is, if not already, is going to be like the next thing on the horizon, because like folks are really putting a lot of money and effort into it right now, and it's a challenging problem. So I'd not say that it's it's coming soon, but that's where a lot of the smartest people are focusing their efforts, because it's a big prize to have if it becomes a reality. ये भी काफी फैसिनेटिंग है अनुभव. ओवरऑल सेशन हैज बीन वेरी इनलाइटनिंग. और हम लोग खत्म करें उससे पहले मैं हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूं कि अगर उनके पास कुछ क्वेश्चंस हैं उद्भव के लिए तो वो पूछ सकते हैं अभी. मीनवाइल सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगा कि ये सेशन यूजफुल था और अगर आपको लगता है कि इस तरह के सेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं आगे भी, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि उद्भव आज हमें एआई के बारे में बता रहे हैं, इस तरह से हम और चीजों के बारे में जानेंगे, मोस्टली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही, जिससे कि अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको काफी हेल्प मिल सकती है. बट ओवरऑल उद्भव, दिस हैज बीन वेरी वेरी यूजफुल. काफी कुछ सीखने को मिला. मुझे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. वंस अगेन गोइंग डीपर इनटू जो रिसोर्सेज आपने बताया कि जो लोग यूज कर सकते हैं, टेंसरफ्लो इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपने मेंशन किया. और देयर इज अ यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल है 2 मिनट पेपर्स करके, जहां पर जिसको मैं फॉलो करना पसंद करता हूँ कैजुअली, जिसमें वो एआई के एडवांसमेंट के बारे में काफी फ्रीक्वेंटली बताते हैं. तो वन ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच इज मेंशन्ड देयर इज कॉल्ड वेट्स एंड बायसेस, बट आई डोंट थिंक दैट वेबसाइट इज फ्री. उसमें शायद देयर इज सम फ्री टियर एंड देन देयर इज सम प्रीमियम टियर. क्या फर्क है वेबसाइट्स? हां, यस सर. तो ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल कोलैब करके है. तो गूगल कोलैब में आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं टू जस्ट डू कोडिंग. बेसिकली इट्स लाइक अ पाइथन नोटबुक. पाइथन नोटबुक भी इट्स लाइक एन एडिटर ऑनलाइन. तो उसमें आप पाइथन लिख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द एआई प्रोग्रामिंग इज डन इन पाइथन इनिशियली एट द टेस्टिंग फेज एंड इवन डेवलपमेंट फेज. तो वो चीज़ सफिशिएंट है, इट्स फ्री, इट्स ऑनलाइन, एंड उसमें आपको एक जीपीयू भी एक्सेस करने को मिलता है, एंड इवन समटाइम्स अ टीपीयू, व्हिच इज द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग एआई फ्रॉम गूगल. तो those things are free in some restrictive manner, ki maybe 5 minutes continuous usage or something like that, पर आपकी चीज़ें सेव रहती हैं और यू कैन डू अदर थिंग्स ऑन दैट. तो ये लर्निंग और टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, कम्प्लीटली फ्री.
एंड सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, जैसे आई थिंक अमेजॉन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड और इवन माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर में आप शायद अभी भी आई थिंक ऑफर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आपको 1 मंथ या कुछ के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आप उनको यूज़ करके यू कैन रन सम मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। पर ये थोड़ा मोर एडवांस्ड है क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें अपने से करनी पड़ेंगी, पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं व्हेन यू गेट टू दैट पॉइंट। बट इवन बिफोर दैट कोलैब, गूगल कोलैब और टेंसर फ्लो जो आप अपने लैपटॉप पे ही कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत टाइम तक बिजी रख सकते हैं और यू विल नो एग्जैक्टली क्या आपको करना है व्हेन यू गेट टू दैट। तो आई थिंक कहीं भी मनी स्पेंड करने से पहले यू कैन गो लाइक वेरी वेरी फार बिफोर यू रियली नीड टू पे। थैंक यू उद्भव। एक क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर का है, अंशु वांट्स टू नो कि एक फ्रेशर जिसने स्टेट कॉलेज से डिग्री की है, क्या वो डायरेक्टली गूगल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनको कुछ स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे? बेसिकली उनके लिए क्या पाथवे हो सकता है जिससे कि वो गूगल या गूगल जैसी कंपनी तक पहुंच सके? राइट, तो आई थिंक इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि यू नो गूगल की तरफ से कोई चेकलिस्ट नहीं है कि आपको यहाँ से करना चाहिए या फिर ये डिग्री होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। पर व्हाट दे विल डू कि आपका रेज्यूमे जब आप अप्लाई करेंगे तो दे विल सी कि हाँ ये चीज़ें जो इन्होंने की हैं दैट मेक्स सेंस कि दे कैन वर्क इन अ टेक एनवायरनमेंट और दे विल नो एंड प्रॉस्पर इन हियर एंड दे कैन कंट्रीब्यूट। तो उसके लिए यू जस्ट नीड सम एविडेंस कि भाई आपने ऐसा टेक में क्या किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या फिर कुछ भी करते हो, स्पेसिफिकली लेट्स से कंप्यूटर साइंस करते हो, तो आपने कोर्सेज किए हुए होते हैं, प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं, दैट्स द प्रूफ कि you can do these things, and finally they ask you to come to the interview, and that's that. Then whatever you do in the interview, it's about that day. But basically the idea is how you get to the interview stage, and उसके लिए आपका resume should reflect that कि आपने ऐसा कुछ टेक में किया है या फिर आपने कुछ बनाया है, and it doesn't need to be सिर्फ work experience. You can write anything in your resume. ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहीं भी किसी भी दुनिया में कि resume की lines should be validated by some external authority or whatever. You know, तुमने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, which is completely specific to you and nobody ever has done it, and this you feel is new and exciting and should be talked about. Write that in your resume because people want to know तुमने क्या किया है, what you can do, right? And all you need is like to tell about, hey, I know this thing, I know technology, this thing, I have done this thing. Because resume is essentially just a way of telling कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने क्या क्या पहले किया है जो कि इस जॉब में relevant होगा. And if you can get that experience in after college by working at some tech place or by doing some additional tech courses or getting some tech experiences through workshops and building new things or any kind of thing that helps you in some way, maybe that's a very useful thing actually. Like if you build anything that solves a problem of yours, then that's a very strong signal that you are capable of being an engineer. Like at least you are thinking that way, that you can take these tools and technologies and everything जो भी अभी available है, and all of this is available at like one click कि आप बस सर्च करो and download करो code and that's it, हो गया. And the problem you have is आप कैसे ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो आपके पास है आज, एक प्रॉब्लम जो आपको बॉदर कर रही है. हाउ कैन यू रिजॉल्व दैट, या फिर किसी और को रिजॉल्व करिए, किसी की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो थ्रू दीज टेक्नोलॉजिकल पीसेस. इफ यू कैन शो वन एग्जाम्पल दैट्स इनफ, and you can expand on that and just like do things ki
through this I have developed these and like learned about different technologies and all that. So it's easy to show how you have a tech experience if you just like start thinking about that. uh, Obviously I would say in this that you need to have like some kind of enthusiasm for technology, that you are excited about building things, because at the end of the day, what is technology? It's using science and using tools and techniques that are out there to build and solve problems, right? And if you can show that in any way that you can use techniques and tools out there to solve a real problem for you or for anyone else, that's a super strong signal for anyone to give you for anyone to give you an interview. Thank you, Udbhav. I hope that answers your question, Anshu. एक और क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ स्टूडेंट जो पूछना चाहते हैं कि वो उनको आईटी में जॉब चाहिए, तो उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि उन्हें एक नॉन कोडिंग जॉब मिल सके. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है. आई डोंट नो, Udbhav, do you have an answer for that? Let me try to think of an answer for that as well. So non-coding jobs are usually in IT, are a lot of fleet management jobs might be there, but even they are not like completely not coding. They are not development jobs, I would say. So the difference between development jobs and these IT jobs is that development job develops features that users will now see and interact with and do. And IT essentially is helping sustain the infrastructure. So how does Google keep running all its millions of computers day by day, every second? That's IT. And essentially in Google, IT is also a developer, but they are essentially tasked with doing this job of making sure everything runs. But if you talk about like some smaller places where things are different, for instance, my previous place, they had a small IT department, but even there, they needed to do some things like shell scripting and use those tools specifically to understand what's going on in the system and basically analyze the fleet of computers and all these that they have. So I don't want to say that there can be a completely like non-coding job unless it's auxiliary related to tech. For instance, I personally deal with a lot of folks who are not coders, but they help in things like defining the product and designing these things and all that kind of stuff. So they don't code obviously, but they understand how things get affected by what kind of problems that we might have. So we work very, very closely with them on what problems we have and what limitations we have, and then how they have to work with that. So it's a little hard to find those kind of jobs, I'd say, through tech, because those are mostly specialized in a different domain. I'll give you another example. In our previous company in Bloomreach, we had this natural language linguist who basically designed templates of sentences of how certain phrases can be written. So in English, we write things like the blue apple was very tasty. I mean, blue apples. But you get the idea that there's a whole template to this, and you can use different kind of templates to generate different kind of sentences. So we had a professional linguist come and write these different kind of templates for us, because we didn't have the domain knowledge and expertise to get that. But they are helping. They are not writing code. They are helping us solve a technical problem. So that's another kind of jobs I can think which don't require coding but are like definitely directly related to tech in one way. But I'd say not to like get not disappointed, but not to get too stressed about coding as well, because there are different levels of coding, right? Like if you just start with C++ and say, hey, I'm going to learn coding and do create a web server,
you're gonna face a lot of problems, and that's something that's difficult even for me to write from scratch. But if the approach should be that how can you solve problems, and coding then just becomes like a tool. Coding is not like the be all and end all of anything. Nobody cares about coding. What people care about is, can you provide solutions? And coding is just a way to write that down, right? Like if let's say you're a senior engineer, you are not going to be writing mostly any of the code. You are going to be providing the solution. You're going to be thinking across all the different problems that can come across the different systems that your system will have to interact with, and potentially analyze those things before they become problems. And that's what you essentially do, right? You understand the system in and out, and then coding is just like, oh, that thing I need to do, so I'll just learn that thing quickly and finish that task off. So you stop thinking of coding as like, hey, that's like super big thing that I need to worry about. So change of perspective is what matters, I think, mostly than just be like, hey, coding is like a specific thing that bothers me. If you just think about the end goal, that hey, I think, what if this was solved through a computer, and is there a possibility? And you just like think in your head that hey, these things exist. If I can somehow do that, and if that somehow involves coding, then if you just think of it as like part of a bigger problem, then it becomes much simpler to tackle. थैंक यू उद्भव. बिफोर वी साइन ऑफ, मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वेबिनार अटेंड किया है और आपको इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो यू कैन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ई सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है यूट्यूब पे. आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, यू कैन फिल द फॉर्म और आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड जो क्वेश्चन है इसका एक आंसर मैं भी देना चाहूंगा, और वो है कि जैसा उद्भव ने बताया कि ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं, और लिंग्विस्ट विच आई वुड से स्टिल क्वाइट स्पेशलाइज्ड, पर आप कुछ और सिंपलर चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यूआई डिजाइन. आई वुड स्टिल से दैट इट्स अ जॉब इन आईटी. या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि उद्भव ने बताया कि सम पीपल हु डिसाइड कि अच्छा हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, आई वुड स्टिल से दैट इट्स अ जॉब इन आईटी, पर जहां पर आपको कोड नहीं लिखना होता है. और जहां लिखना भी होता है, आई 100% एग्री विद उद्भव कि कोडिंग से कोई डरने वाली बात नहीं है. इट्स जैसे कि उद्भव ने बताया कि इट्स जस्ट अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कोई चीज आप शायद खुद से करें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, अगर आप कोड लिखें तो हो सकता है वो चीज ऑटोमेट हो जाए, वो बहुत इजीली, बहुत सिंपली, और हम 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग सॉल्व कर पाए. तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है. इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी वेबसाइट l4o.in पर बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर हम लोग मर्न स्टैक में सिखाते हैं, और एक जावास्क्रिप्ट का भी हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है. अगर आपको कोडिंग कोई बैकग्राउंड नहीं है, इफ यू वांट टू लर्न कि अच्छा कोडिंग कैसे करते हैं, तो एक कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, l4o.in हमारी वेबसाइट पे. और उसका लिंक भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट इज द आंसर फ्रॉम माय साइड. उद्भव, आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स के साथ? Overall, I think it's a matter of feeling confident. I think a lot of times we don't know what things are out there and what can be done. And it feels like very scary to be able to put in so much effort, और उसका रिजल्ट कब तक आएगा वो पता नहीं है. पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि all it needs is your passion and interest. कि अगर आप खुद एक बहुत ही एक्साइटेड हैं किसी चीज़ में, और उसमें आप एफर्ट डाल रहे हैं, रियल एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दिखेगा. तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट कि अरे यार क्या है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, all that matters is your enthusiasm and excitement. Like everyone starts at the same place, and it's all कि कौन कितना एक्साइटेड है किसी चीज़ को लर्न करने में और किसी चीज़ को समझने में. एंड इट्स नॉट ड्यू टू द फैक्ट कि आज मैं ये पढ़ रहा हूँ बिकॉज कल को आई नीड अ बेटर सैलरी और एनीथिंग लाइक दैट. My personal opinion is mostly कि I really want to understand these things because
I have a specific problem of mine in my mind that just helps me learn about these, like makes me force myself to learn about these new things because they are needed for the solution. So that is a way of like constantly learning, and I would say that's what really matters, that you have that passion of, and passion is like an overloaded word, but I'd say you have that uh, uh, energy to really put in the effort of learning and getting excited by something, that you can't stop like going to the next page or the next article and these kind of things. And if you have that, then the results come automatically. Like that's been my thing, that I didn't ever think that I wanted to like be in Google, or I wanted to be in Silicon Valley. That was never my goal. uh, I found myself here, and that is surprising because I never was going with this goal in my mind. And looking back, I don't have like a specific thing that made it like this, right? And all the things that happened, like JE and IIT and grad school and so on, were a result of me just being excited for things I wanted to do. Like I was always excited in math, science. That happened to be what also helped in entry into these places, and that just became a thing. So if you are that kind of a person who loves to solve problems, who loves to take on challenges and do anything to solve them, can't like rest without like figuring out a solution for these kind of things, then if you have that drive, that focus, then you don't have to worry about it. You just need to direct to a specific thing, and the results will automatically come. थैंक यू उद्भव. मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग भी था, और it was a little different interacting with you in such a formal setting. पर हमारा रेगुलर डिस्कशन हम लोग इस कॉल के बाद कर सकते हैं. बट थैंक्स अ लॉट उद्भव फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आई होप स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहा होगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए यूजफुल रहा होगा. और थैंक्स लॉट टू एवरीवन जिन्होंने आज ट्यून इन किया. आई होप यू कैन ज्वाइन अस फॉर मोर ऑफ दीज सेशंस, और आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट you don't miss on any other videos in the future, so that you can catch on more of such webinars. Once again, thanks a lot, Udbhav, for doing this. It was great catching up with you again. Bye. Bye.